Okay, boys and girls, we are going to start studying. हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं. Today we will study resistivity, a topic that some students find it confusing to understand. हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है. हाँ, confusing. So that topic is resistivity of the material of a conductor. Resistivity of the material of a conductor, insulator or semiconductor. Resistivity. See, suppose I have taken 1 centimeter long wire. I have taken 1 centimeter long wire. हालांकि थोड़ा लंबा बनाया मैंने, 1 centimeter से ज़्यादा है. But suppose it is 1 centimeter in length. How much is the length of the wire? 1 centimeter. I have taken another wire. It also is 1 centimeter in length. ये भी 1 centimeter length का है ना? First wire का length 1 centimeter. 1 centimeter. Second wire का length 1 centimeter. फर्स्ट वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिकनेस. समझता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए? पाई आर स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज दिस सर्कुलर एरिया थिकनेस ऑफ द वायर इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. So this wire also has same area of cross section 1 centimeter square. Both the wires have same length and same area of cross section. And you know, resistance of a metallic conductor is directly proportional to its length. मालूम है सबको? जितना लंबा वायर रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. जितना लंबा वायर नहीं रहेगा, जितना शॉर्ट लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस भी कम रहेगा. And do you know resistance is inversely proportional to area of cross section? मतलब if the area of cross section of thickness of the wire is more, its resistance will be less. And if the area of cross section or thickness of the wire is less, then its resistance will be more. And if we join these two together, it becomes resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. We can join these two equations together. And now a question arises in my mind. What is that question? Resistance depends on length. Resistance depends on area of cross section. Both the wires have same length and both the wires have same area of cross section. Still, this wire has suppose less resistance and this wire has more resistance. What could be another factor which is different for both the wires? Very good. Material. So it means that the resistance of a metallic conductor depends on material also. So see what I am going to do here. I explained to you in the previous class that whenever we remove this proportionality sign, we need a constant on the right hand side. And here that proportionality constant is a Greek letter called rho. R-H-O. Rho. The name of the letter is rho, and it denotes resistivity. Resistivity of the material of the conductor. Do not get confused between resistance and resistivity. It is like P with a tail, curved tail. This letter is called rho and it denotes resistivity multiplied by L divided by A. So this is the formula for resistance. Resistance is equal to resistivity multiplied by length divided by area of cross section. So resistance of a metallic conductor depends on area of cross section, it depends on length and it depends on resistivity, which is constant for a particular metal at a constant temperature. Now, another question arises in
my mind. What can be the difference between resistance and resistivity? है ना? ऐसा क्वेश्चन आता है मन में. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलने में तो एक जैसा लगता है. Can there be any difference between these two? Yes, there must be some difference between these two. And the difference is, पहले ये समझे कि प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ से आया. याद दिलाओ कल की कहानी जो हमारे टीचर हमको बचपन में पढ़ाए थे. हमको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे. ऐसा बॉक्स बन के आता था. उस दिन भी समझाया था. यहाँ x लिखा रहता था, यहाँ y लिखा रहता था. यहाँ खाली जगह यहाँ पर लिखा रहता था 10, यहाँ 30 लिखा रहता था. यहाँ खाली जगह रहती थी और यहाँ 60 लिखा रहता था. यहाँ 30 लिखा रहता था और यहाँ खाली जगह रहती थी. फिर हमको क्या गिवन रहता था? x is directly proportional to y. ऐसा दिया रहता था. What does it mean? When the value of y increases, the value of x also will increase. हम ऐसा बोल सकते हैं. Sweat is directly proportional to temperature. If the temperature increases, the sweat also will increase. And if the temperature decreases, then the sweat also, pasina also will decrease. So, sweat is directly dependent on temperature. तो यहाँ पर भी x is directly dependent on y. इसका मतलब है, और जब भी ये हटाते तो हम क्या करते मालूम है? राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहती है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं. तो x is equal to constant into y. मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक फिल करना चाहिए. सर वो x और y किसको डिनोट करते हैं? x is some value and y is some another value. वो कुछ पर्टिकुलर डिनोशन नहीं, कुछ डिनोशन नहीं है. ऐसा भी बोल सकते हैं x is the number of pens purchased and y is the price to be paid. x and y. So the y is the price to be paid. या ऐसा बोलते हैं y is number of pens. Number of pens purchased, y, and x is rupees to be paid. Rupees to be paid. So x is directly proportional to y means rupees to be paid is directly proportional to the number of pens purchased. The more the number of pens that you purchase, the more will be the rupees you will have to pay. Understood? But one thing is constant between them. So x is directly proportional to y. What is the value of x here? 10. And we don't know the value of constant. Multiplied by what is the value of y? 30. So what should be the value of the constant? 21 by 3. 1 by 3. The value of the constant will be 1 by 3. So we will always remember that the value of constant in this case will be 1 by 3. And हम ऐसा करते थे. And then we used to solve it further. मैं मिटा रहा हूँ. Then we used to solve it further, and the next step used to be like this. X is directly proportional to y, therefore x is constant into y. And now we have already known the value of constant. So this time x is equal to, constant was 1 by 3 into, this time the value of y is 60. How much will the value of x be? 20. So we used to write 20 here, and the teacher used to give us 1 mark for writing it. Then again we used to solve further. We used to write x is directly proportional to y. X is equal to constant into y, and then we would put the value of x, and we used to know the value of constant, and then we could easily find the value of y. Y will be equal to 90. And we used to write 90 here, and the teacher used to give us another mark. And this way we used to earn 2 marks. So this tells us whenever you remove this proportionality sign, you have to multiply and you bring, suppose whenever you remove this proportionality sign and bring an equal to sign, you have to multiply the right hand side with some constant value. Fixed value. Understood? So here also we have done the same thing. R is directly proportional to L. R is inversely proportional to A. Means if you increase the length, the resistance also will increase. If you decrease the length, the resistance also will decrease. If you increase the area of cross section or thickness of the wire, resistance will decrease. If you decrease the area of cross section, if you take a thin wire,
it will have more resistance. So when you remove this proportionality sign and use an equal to sign, you have to multiply the right hand side with a constant value, and this constant value is rho, which is called the resistivity of the material of the conductor, not the resistivity of the conductor, resistivity of the material. This value is constant for a particular material. It has a fixed value for copper, it has another fixed value for gold, it has another fixed value for silver, it has another fixed value for nichrome, it has another fixed value for any other metallic metal. So now I am going to differentiate between resistance and resistivity. But before we do that, let me pause the camera, pause the video and fill some ink in the pen because it's very light, faint. Okay, होगा चालू ये? Alright. Now see, resistance is equal to resistivity multiplied by length upon area of cross section. So can I rearrange it for resistivity? Rho is equal to R into A upon L. Is it correct? Yes. What should be the SI unit of resistivity? Resistance has a unit ohm. Area has a unit SI unit meter square. Length into breadth by R square upon length has SI unit meter. So meter square and meter will get cancelled, and the SI unit of resistivity is ohm meter. This will help us in differentiating between resistance and resistivity. Resistance has SI unit ohm and resistivity has SI unit ohm meter. So here I will write, there are not many differences between resistance and resistivity. This is resistance and here we are writing resistivity. So what is resistance? Acha, one more thing, boys and girls. If I put the value of R equals 1, if I put the value of area as 1 centimeter square and L is equal to 1 centimeter, very good. Then rho will become equal to R. Numerically, rho will become equal to R. Understood? If I put area is equal to 1 and length also is equal to 1, so 1 will get cancelled and resistivity will be equal to resistance. So I am writing, what is resistance? Opposition to the flow of electrons in the metallic wire or anywhere else is called electrical resistance. Opposition to the flow of electrons. याद है नहीं, हमने पढ़े थे एक जमाने में? Boys and girls, याद आता है कुछ? Boys, आता है? Very good. So opposition to the flow of electrons is called electrical resistance. And what is resistivity? Resistivity is defined as the resistance. It is nothing but equal to resistance of a conductor. Resistivity is equal to the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. क्या यूनिट यानी 1 होता है? यूनिट यानी एकता का टूट होता है? Yes. Resistivity is defined as the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. हालांकि वहां मैंने कंडक्टर लिखा है, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की भी होती है. अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर. ऐसा यूनिट इज ओम मीटर. कोई और डिफरेंस? डज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
length. Does it depend on area of cross section also? Yes. Yes. Less area of cross section has more resistance. More area of cross section has less resistance. Longer wire has more resistance. Shorter wire has less resistance. But resistivity does not depend on length and area of cross section. Resistivity does not depend on length and area of cross section. Resistivity does not depend on length and area of cross section. Suppose I have a 2 meters long copper wire. मेरे पास सपोज 2 मीटर लंबा कॉपर वायर है, 2 मीटर लंबा कॉपर वायर है मेरे पास, और मैंने उसको खींच के लिया. आई स्ट्रेच्ड इट यूनिफॉर्मली. तो क्या हो गया? तो उसका लेंथ बढ़ गया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया. किसी भी वायर को खींचेंगे तो मोटा वायर पतला हो जाएगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा. तो ये वायर अब हो गया 4 मीटर्स लॉन्ग और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ज्यादा था अब कम हो गया. व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी? विल इट इंक्रीज 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और 2 टाइम्स? रेजिस्टिविटी कितने टाइम्स बढ़ेंगी? पक्का श्योर? सबके सब गलत हो गए. रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम. क्यों? रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी सेम रहती है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम. हाँ, आप ये बोल सकते कि वायर 2 मीटर की जगह 4 मीटर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया. ज्यादा वायर था पतला हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ऐसा बोल सकते. बट रेजिस्टिविटी नहीं चेंज हुई. क्यों? पहले भी ये कॉपर वायर था, खींचने के बाद भी कॉपर वायर है, और कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स रहती, गोल्ड के लिए फिक्स रहती, सिल्वर के लिए फिक्स रहती, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स रहती, नाइक्रोम के लिए फिक्स रहती. क्या एक टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में? yes. देखो रेजिस्टिविटी का एक टेबल दिया है. द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटीज दिया है, ब्राउन कलर का टेबल. हाँ, क्या वो टेबल बुक में से देख देख के मैं बोर्ड पे बनाऊं? नहीं. क्या वो टेबल लर्न करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं. काल्पनिक है, किसी के जीवन से कोई उसका सीधा संबंध नहीं है. वो याद करना हमारे बस की बात नहीं है. वो रजनीकांत के लिए रहना. याद हो गया, अच्छी बात है. तो देखो आप सिल्वर का, अच्छा मुझे बताओ सिल्वर का रेजिस्टिविटी ज्यादा है या कॉपर का? कॉपर का ज्यादा, 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर्स. अच्छा, एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है या कंडक्टर्स की? गलत. एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है. हाँ, नाइक्रोम इज एन एलॉय. और नाइक्रोम कैसे बनता है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन. अच्छा, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है. ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा. हार्ड रबर, एबोनाइट. एबोनाइट इज अ टाइप ऑफ वुड, लकड़ी, झाड़ की लकड़ी होती है. डायमंड की रेजिस्टिविटी और भी ज्यादा. और पेपर, ड्राई पेपर, सूखे कागज की रेजिस्टिविटी और भी बहुत ज्यादा. तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है उसकी कंडक्टिविटी कम, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा. अच्छा, मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिमिलैरिटी क्या है? तो बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है. ये दोनों में सिमिलैरिटीज है, बाकी डिफरेंसेस है. अब इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी. तो मुझे एक बुक दे दो. आपने एसचन लाए थे देवस्मिता? लाए एक्स्ट्रा? हाँ दे दो मुझे, फिर लाए होंगे. या अगर नहीं लाए होंगे तो अपनी एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट. अगर कुछ भी नहीं लाए होंगे तो मैं अपने मन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लूंगा. इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है. क्यों मालूम है? कैलकुलेशंस.